वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो विल पे रिस्पेक्ट टू श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। उनका मंत्र स्क्रीन के ऊपर है, यू कैन रिपीट अलॉन्ग विथ मी, फॉलो अलॉन्ग विथ मी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोई युग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भरणौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल
प्रचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन. So one last shloka before we read a shloka from Bhagavad Gita, which is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So all of you can sit straight, neck in the line with the back. If you remember the shloka, close your eyes, fold your hands, and you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we'll read a shloka from Bhagavad Gita, chapter 9, shloka number 34. Sorry. Here the shloka is on the screen. You can repeat after me. Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mama Evasyashi Yuktevam Atmanam Matparayana. So I'll recite the whole shloka for benefit of all of us. Lord Krishna is saying this shloka to Arjuna. Bhagwan Krishna Arjuna को कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवश्यसि युक्त्वेवम् आत्मनां मत परायणः. भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे. Everybody understands Hindi? Hindi सब okay? Yeah? Hindi okay? Oh, our Luke Prabhu. So I'll speak in English because we have Kevin and Luke Prabhu also here, so everybody can understand. So Lord Krishna is saying to Arjuna, he's saying, engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. So Lord Krishna is asking Arjuna in 9th chapter of Bhagavad Gita is called as the most confidential knowledge. So in this, Lord Krishna reveals about his own identity. Lord Krishna says that he is the Supreme Personality of Godhead. He is the origin of everything. And he says that we all should always engage our mind in thinking of me. Me means Lord Krishna. Become my devotee. Become my devotee means become the devotee of Lord Krishna. And offer obeisances to me. Offer obeisances to me means obeisances to Krishna. And worship me. We should worship Lord Krishna. Being completely absorbed in me, surely we will come to me. So Lord Krishna is asking to always think about him, to always worship him, or pay obeisances to him. So how can we do that? Lord Krishna appeared 5,000 years ago, right, in Bharatvarsha, in Vrindavan. But then Lord Krishna, after he is performing his pastime, he went back to his own abode. So then, for the benefit of all the devotees, Lord appears in the form of deity. जो भगवान का मूर्ति है, ये भगवान की कृपा से आया है. भगवान का मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है. In the form of deity, Lord Krishna gives us an opportunity to do the things like engage our mind in thinking about Lord. So you can see beautiful deities of Lord. In the middle is Shri Radha Vrajavatsal. On the left is Shri Sita Ram Lakshman Hanumanji. And on the right is Shri Jagannath, Shri Baldev and Subhadra. है ना? तो भगवान ये रूप में क्यों आए हैं? क्योंकि हम ये भगवान की जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है,
our mind engaged in thinking about Krishna. So we can take the darshan of beautiful form of Krishna, beautiful form of Lord Ramachandraji, or beautiful form of Sri Jagannath Baldev Subhadra. Now, Lord can appear in any form to his devotees. भगवान कोई भी रूप में भक्त के सामने प्रकट हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे on the right side you see the deities of Lord Jagannath Baldev Subhadra on the right side, and in the middle you see Radha Krishna, and then Sita Ram Lakshman and Hanumanji. So do you know the difference between Jagannath Baldev Subhadra and Radha Krishna, Krishna Balram? What is the difference? What is the difference between the deity of Lord Jagannath Baldev Subhadra and deity of Radha Krishna and deity of Sri Sita Ram Lakshman and Hanumanji? फर्क क्या है? कौन बताएगा? Yes, Advi? Because of their pastime. Yes, yes. Anybody else wants to say anything? What is the difference in the deities? Because that's how Krishna wanted their devotees to take the darshan. Darshan, yes, very nice, very nice. So Lord Krishna wanted some devotees to take darshan in the form of Jagannath. Yes. और कोई बता सकता है क्या क्या फर्क है डीटीज में? हाँ? तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो डीटी है ये वुड से बना है. इट इज मेड ऑफ वुड. ऑलवेज वेयरएवर यू गो, हैव यू एनीबॉडी हैज बीन टू जगन्नाथपुरी? जगन्नाथपुरी कोई गया है? कोई नहीं गया है जगन्नाथपुरी. सो भारत में बड़ी पवित्र धाम है, उसमें 4 धाम पवित्र है ना. उसमें जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी इज वन ऑफ द 4 धाम यात्रा. सो इफ यू, सो जगन्नाथपुरी द deities आर मेड अप ऑफ वुड. So all other deities are either made up of the stone or they appear in the form of stone. They are not stone, but they take the form of stone, takes the form of a lord. Now there is no difference between the deity and God himself. Now Jagannath Baldev Subhadra deity is very special. On the right side you see Jagannath Baldev Subhadra. We have Rath Yatra. Last month there was Rath Yatra in India, Bharatvarsha. Jagannath Puri was the Rath Yatra. Now we here in Thunder Bay, because of weather and circumstances, we are celebrating it in July. So 22nd July we have Jagannath Rath Yatra in Thunder Bay. Right? So we will have Jagannath Rath Yatra at Marina Park. Everybody knows Marina Park? Sabko malum hai? So all of you come. Now Jagannath Rath Yatra is every year in India, and Jagannath Ji has a very special form. And this form of Jagannath Ji appeared thousands and thousands of years ago. There is a wonderful pastime of Lord Jagannath. Why Lord Jagannath appeared in this form? And the reason he appeared is because he wanted to shower his mercy to his devotee. So there is a pastime of Lord Jagannath. जगन्नाथ जी की एक बहुत सुंदर कथा है कि उनका रूप ऐसा कैसे है. If you see carefully, then some people may say that Jagannath Baldev deities, Subhadra deities are incomplete. Some people may say because they don't have all the deities have the fingers and legs. They don't have the legs or the fingers, right? They don't have it appears like incomplete form, right? So there is a reason behind this deity being like that. So the reason is a great devotee of Lord. His name is King Indradhyumna, Maharaj Indradhyumna. So this story goes back thousands and thousands years back. Actually, Jagannath Puri temple, if you ever go to Jagannath Puri, this temple itself is a miracle. It is spread in the about 10 acres area, and this temple was built more than 2000 years back. I mean, they say 2000, but I mean, it is more than that. So the temple of Jagannath Puri is very, very old. And this was built by a great king called as, his name was Maharaj Indradhyumna. So Maharaj Indradhyumna was a great devotee of Lord, and he had a desire, after reading Bhagavad Gita, that shloka which we read here, Manmana Bhavamad Bhakto Madhya Jivam Namaskuru Mam Eva Shri Yuktevam Atmanam Madparayana. So Maharaj Indradhyumna, he wanted to serve Lord in a form of a deity, and he was looking for a beautiful form of deity of Lord. So he was asking everybody that where can I take a darshan of beautiful form of Lord Krishna.
So one time a Brahmana, here you can see on the screen, Maharaj Indradyumna sitting here, and this young Brahmana, he comes to the court of Maharaj Indradyumna. And when Maharaj Indradyumna asked him, Ki, where is the beautiful form of Lord, where I can take darshan and I can serve him personally? महाराज इंद्रद्युम्न का विचार था कि एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बनाए और भगवान की सेवा करें, लेकिन वो मंदिर में ऐसी सुंदर डीटी हो कि जिसको देख के मन मोहित हो जाए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सबको पूछा कि कहाँ पे है ये ऐसे भगवान जिसको देख के हमारा मन मोहित हो जाए। तो दिस ब्राह्मणा व्हेन ही केम टू द कोर्ट ऑफ महाराज इंद्रद्युम्न, ब्राह्मणा said that very close to your kingdom there is a hill which is called, what is the name of the hill? It's called Nilachal. Huh? And on the top of the hill there is a beautiful form of a deity of Lord Krishna, and his name is Neelamadhava. What is his name? So the Neela means blue. So Neela Madhava means this is a blue colored form of Lord Krishna is there on the mountain, and you should bring that deity from the top of the mountain and establish a beautiful temple of Lord. So Maharaj Indradyumna had the desire to bring the deity of Nilmadhav. So he sent all his representatives, soldiers, that go and find the deity of Nilmadhav. Quite a few of them went and they came back because they could not find Neelamata. But then one of his representative, his name was Vidyapati. He went to the jungle and he did not come for a long time. Actually, he lost himself in the jungle. And when he was in the jungle, he came across a community, Shabra community. Shabra means these are very special type of Adivasi or backward class community. They are very primitive stage, so they are hunters actually. So this Vidyapati, who was lost in the jungle, he came across this Sabra community, and the chief of the Sabra community was Vishwavasu. Okay, you all remember this name because I'm going to ask you these names again as a question bank. Okay, what was the name of the person who went to the forest? Who will tell me? Huh? And who was the Shabra king? Vishwabasu. Huh? You remember the names, huh? More names are going to come, so be attentive. Is that okay, Advik? Vidyapati stayed at his house and he looked after him as a guest, So he gave him the food and he said, I'm lost. He said, you can stay here in my house for a few weeks, as long as you want. And this Vishwavasu had a daughter. Her name was Lalita. Okay. So Vidyapati, while staying in the house of Vishwavasu, he became friend with Lalita, and they used to look after him very nicely. But what he observed is that Vishwavasu here every day used to leave the home in the night time and used to come back late afternoon next day morning. And when he used to come home, there used to be a very special fragrance coming out of the mouth of Risha. You can come. Come. You're talking about the story of Lord Jagannath. You can sit here. Okay? I wanted to play without me. Okay, she can play afterwards. So, Vishwavasu, we used to leave in the middle of the night and come back next day morning, afternoon. And when he come home, what do you used to notice? A fragrance used to become from the body of Vishwavasu. And Vidyapati was always surprised that why he is going in the middle of the night and coming back next day afternoon. That was always a mystery. And another mystery was that a fragrance was coming from his body. So that was another mystery. So she asked Lalita because they became very good friends. And Lalita never told him because it was a secret, not to be told to anyone. Vishwavasu had told Lalita
that not to tell anyone where he is going in the middle of the night and why he come back next day afternoon. But slowly and slowly, Vidyapati and Lalita, they became very friend, and one day decided that they will get married. So Vishwavasu got them married, and then Vidyapati became the husband of Lalita. When you become a husband, wife has to really reveal every confidential things to husband. You can't hide anything from the husband, you know. And the same with wife, husband also. Husband cannot hide anything from wife, and so that is like a best relationship ever is husband and wife. So now, when upon asking, Lalita had to reveal the secret to her husband, because it was her duty as a wife. Vidyapati, King Indradyumna had sent Vidyapati to find नील माधव, है ना. राजा ने इसलिए भेजा था कि आप नील माधव को ढूंढ के लाइए, लेकिन किसी को नहीं मिल रहे थे नील माधव. क्यों नहीं मिल रहे थे? Because Vidyapati was Vishwavasu was hiding them. So Vidyapati asked Lalita, "Can you please ask your father to take me to the top of the mountain?" But uh, Vishwavasu refused always that no, I cannot take it. After many requests, then one day Vidyapati said, "Okay." Vishwavasu said, "Okay, I will take you to the top of the mountain, but he said that I will blindfold you so that he cannot see the route." Because once you see the route, then you can find the deities. So you can see here that Shabra is leading, and Vidyapati, his eyes are blindfolded. Why? Because he did not want to reveal the path, right? So in this way, Shabra king Vishwavasu blindfolded and took Vidyapati on the top of the mountain of Nilachal. And when they reached at the top, then he opened the eyes. But then Vidyapati was so smart. So while leaving the house, in his pocket, he filled with mustard seed. He took some mustard seed with it. Why mustard seeds? Mustard. So that when he goes back, he could know what the path is. Because mustard grows very quickly, है ना. Mustard का plant हो. तो उसने क्या किया? On the way, he was sprinkling the mustard seeds. So that path of mustard plant will be the path of the Nilmadhava. So he was a smart guy. So he sprinkled all the mustard seeds all along, and then they reached at the top of the mountain. Hare Krishna. So when they reached at the top of the mountain, then they opened the blindfold. Nilmadhava. Nilmadhava is the blue colored form of deity. And it was so beautiful form of Lord Krishna that Vidyapati was really surprised and mesmerized. Such a beautiful form, you know. भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन बहुत ही सुंदर रहता है. Okay, who will tell me what is the color of the clothes without looking at it? What is the color of clothes Krishna wearing today? He is looking at it now. What is the color of clothes Krishna wearing? You think blue? What is the color? Multicolored. Okay, last week what was the color of Krishna's cloth? White color. Huh? What is the color of Krishna's necklace today? Huh? Pink. And Radharani's necklace? Pink and there is a violet color inside. You see that? So when you take the darshan of the Lord, you look very carefully. What is Krishna wearing today? What is Krishna's peacock feather? Where is he? What are the Krishna's ornaments? You know, what color are the ornaments? So we observe them very carefully. So then we can really enjoy the darshan of Lord, right? So to take the darshan of the Lord, what is the method? So the method to take the darshan of the Lord, you start from the feet. भगवान के चरणों से दर्शन चालू होते हैं. So you take the darshan of the lotus feet of the Lord. What do you see at the lotus feet of the Lord? Tulsi. Very nice. Hare Krishna. And then
What do you see after Tulsi? After Tulsi, what do you see? भगवान के चरणों में क्या है? कौन कौन से कलर के हैं एंकलेट बताइए? नहीं है, मल्टी कलर नहीं है, गोल्डन कलर के हैं। आपने दर्शन ठीक से नहीं किया है। बांसुरी कौन से कलर की है बताइए, देखे बिना? गोल्डन कलर की है, देखिए। देखिए, दिस इज हाउ यू टेक दर्शन, राइट? और भगवान के हाथ में छड़ी है या नहीं बताइए? कौन से कलर की है? अच्छा। और राधा रानी के हाथ में फ्लावर है या नहीं? कौन से कलर का फ्लावर है? Red flower with one what color? What are the things in the red flower? Now, what in the middle? What is the color of that flower? हाँ, green तो आजू बाजू है, बीच में क्या है? So you take the darshan of the Lord very carefully, right? So when Vishwavas Vidyapati started taking the darshan of the Lord very carefully, then he noticed so many beautiful things in Krishna's darshan. So he was so much attracted, and he thought that I should take this deity to king. What is the name of the king? Indradevna Maharaj, very good Rishi. So then he thought that I will take this, but then Vidya Vishnu had to inform to the king Indradevna. I do not know where did it is happen. Now, of course, Vishwavasu would know because he was worshipping them. But after Vidyapati left, actually Nil Madhav deity disappeared. So at that time, King Indradhyumna decided that I will fast here until death, until I find Nil Madhav. At that time, there was a voice coming from the sky which said that King Indradhyumna, I as Nilamadhav has disappeared from this planet, but I will reappear here in another form when you build a big temple of Lord Krishna. So then, on the top of that Nilachal mountain, King Indradhyumna built a huge temple, which is now Jagannath Puri temple. आप अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आज का जो मंदिर है, it is on the top of a height elevation. Actually, if you go to Jagannath Puri, I will show you a map of Jagannath Puri. Here, ये है जगन्नाथ पुरी. आप अगर उड़ीसा जाते हैं, if you go ever to Orissa, then here is the Sri Kshetra. It is called as Sri Kshetra, also called Jagannath Puri, where Lord Jagannath resides. And the shape of this is like a conch shell. Jagannath Puri is just like a conch shell. And in the middle of the conch shell on the top is the temple of Jagannath Puri. Now, the Jagannath Puri is also called Nilachal, and the temple is very, very beautiful temple here. The temple is in the complex is having in the 10.7 acres, and the structure is about 214 feet high temple. Very huge temple of Lord Jagannath. And on the top of Lord Jagannath temple, you see a chakra. This chakra was established by Lord Brahma, actually. So when this temple is, even though it is built thousands and thousands of years back, this is a perfect example of the Hare Krishna Beta. If you want to play, you can play in the dining room. You can play there. Okay. So this Jagannath Puri temple, even though it's built thousands of years back, it's such a height, there were no modern architectural equipments available at that time. But still they built this temple, a huge temple. And within the temple premises itself, there are hundreds of temples. Huh? Yeah, go. Yeah. So this temple was built by Maharaj Indradyumna for Lord. In the temple premises itself, there are kitchen. There's a big kitchen, and there are all the kitchen equipments. They never use steel pots or anything. You know, these are mud pots. They cook in the mud pots, and the way they cook is they keep all the pots on top of each other. They say 7-8 layers. Or at the bottom pot, suppose they will put dal on the top, they will put rice and then sabji. Shishi Gaunitai ki, Shishi Sitaram Lakshman Hanuman ki, Shishi Radha Rajwatsan ki,
श्री श्री जगन्नाथ, श्री श्री बलदेव सुभद्रा माता की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। So they cook in this kitchen and nobody is allowed to go inside the kitchen. Only the cooks can go inside the kitchen. And all the stoves, the cooking pots are on top of each other. And the pot at the top cooks first, and the bottom cooks the last. Because the steam travels, right? So that's how. And they never use the coal or anything. They use the wood as the fuel. So the size of the kitchen is 15,000 square feet kitchen. So huge kitchen. And how many cooks they cook in the kitchen? There are 600 cooks at a time, cooking all the time. And every day they cook for at least 100,000 people. How many? 100,000 people every single day, still as of today. And in the festival time, they will cook for more than 200,000 people every day. And it is not only one type of food. The food they cook is chappan bhog, which means 56 types of food items every single day. Still, it is going on as of now while we are speaking. Now, the beauty of Jagannath temple is that it is closed only for 3 hours in 24 hours. Otherwise, you can take darshan of Jagannath Ji in the middle of the night also. 12 o'clock also Jagannath Ji open. No problem. You can go anytime. Only 3 hours they are closed just because the pandas have to change the dress and the deity. But so that means that they are not even closed. The processes, the puja ceremony is going on. So as I said, that temple is very huge, and there are 600 cooks and 400 assistant servers there in the temple. And the fire in the kitchen, it never goes off. That is another thing. Always cooking going on in the kitchen. And there are people working in the shift. And nobody is paid. Everybody is volunteer, devotees, right? Why would you be working for Krishna? Now, the water they use for cooking in Jagannath Puri temple, this water is not a tap water. There are wells within the complex, and only they use the well water. And these wells are there for thousands of years since Maharaj King Indradyumna built the temple, and they use the same water. This is like Ganga and Yamuna water there. And as I said, they cook 100,000 people prasadam one day, and there are pandas or chiefs, priests. There are 6,000 priests there in the temple premises. So that's another complex. So here you see on the top there is a chakra. So this is called Nila Chakra. And the beauty of this chakra is that wherever you are in Jagannath Puri, any corner of Jagannath Puri, you will be able to see this chakra. You can take darshan of Lord Jagannath. And taking darshan of this chakra is equal to taking darshan of Lord Himself. So if you ever go to Jagannath Puri and you cannot go inside, अगर आप भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो आप ये जगन्नाथ जी के चक्र का भी दर्शन किया तो भगवान के दर्शन करने के बराबर है. कहते हैं कि ये चक्र की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी. हाँ, जब भगवान का मंदिर बन गया, ये महाराज इंद्रदेव ने भगवान का मंदिर बनाया, तो ब्रह्मा जी को बुलाया था मंदिर का इनॉग्रेशन के लिए, और ब्रह्मा जी ने आके ये चक्र की स्थापना की है यहाँ पे. इसलिए ये चक्र का जब हम दर्शन करते हैं तो हमें भगवान का दर्शन हो जाता है. और ये चक्र का विशेषता क्या है? तो ये चक्र आप कहीं से भी दिखेंगे जगन्नाथपुरी में तो वैसे ही लगेगा कि आपके सामने ही दिख रहा है चक्र. ऐसा ऐसा एंगल में नहीं, हमेशा आपके सामने ही फेस करेगा. उसका पोजीशन ऐसा है. और इसके ऊपर जो फ्लैग है ना, ये यू सी दिस फ्लैग, दिस फ्लैग इट इज़ एट हाइट ऑफ 214 फीट, और रोज ये फ्लैग बदला जाता है. और कैसे बदलते हैं? तो क्लाइंब करते हैं लोग. दे क्लाइंब 214 फीट एवरी डे मॉर्निंग 4 o'clock एंड कम डाउन एंड चेंज द फ्लैग. कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, दे क्लाइंब एवरी डे एंड चेंज द फ्लैग्स. So this is the beauty. The chakra itself is almost 12 feet.
that's a very big chakra. So height will be almost the height of this temple room probably. And it has circumference of 36 feet, so bigger than the size of this room. This room is about 30 feet. So इससे भी बड़ा चक्र का diameter है. So this is, you can see that this is such a big chakra. एंड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल भगवान के जब आप दर्शन करने को जाते हैं तो एक स्तंभ आता है, इसको कहते हैं अरुण स्तंभ. हाँ, ये अरुण स्तंभ पहले कोणार्क टेम्पल में था. कोणार्क टेम्पल बाजू में ही है जगन्नाथपुरी से. इफ़ यू एवर गो टू जगन्नाथपुरी then there is a Konark temple. It's a beautiful temple, and this stamba was shifted from Konark temple to Jagannath Puri temple by Shivaji Maharaj from Maharashtra, because Mughals were destroying all the temples. So at that time Shivaji Maharaj shifted this pillar, which is called Aruna Stamba, here. And when you go inside the temple, there is another stamba which is called as Garuda Stamba. भगवान का एक और स्तंभ का नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ. गरुड़ स्तंभ क्या है? तो ये भगवान के मंदिर के आगे लगा रहता है और ये गरुड़ जी का स्थान लेता है. गरुड़ जी कौन है? तो भगवान के सेवक हैं. तो भगवान के भक्तों का स्थान भगवान के सामने रहता है. जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी का स्थान है, वो भगवान के एग्जैक्टली सामने है ना. गरुड़ जी का स्थान हमेशा भगवान के सामने, भगवान के अल्टर के ऊपर नहीं रहता है, भगवान के सामने रहता है. तो गुरु का स्थान जो है वो हमेशा भगवान के सामने रहता है, भगवान के ऊपर, अल्टर के ऊपर नहीं रहता है. कुछ कुछ मंदिरों में हम जाते हैं, देखते हैं कि भगवान के बाजू में ही गुरु को बैठा देते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द वैदिक कल्चर. ऐसा नहीं होना चाहिए. भगवान, अगर आपके घर में भी भगवान का मंदिर है तो भगवान के मंदिर के अंदर हमारे माता पिता पूर्वजों इनकी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए. कुछ कुछ लोग वही मंदिर में सब कुछ रख देते हैं, ये गलत है. आप भगवान के स्थान पे ऊपर भगवान ही रह सकते हैं और कोई नहीं आते हैं. तो इसलिए गरुड़ जी का स्थान हमेशा भगवान के सामने रहता है. तो ये जो गरुड़ स्तंभ है वो आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे तो उसमें 4 द्वार हैं. देयर आर 4 गेट्स एंड द मेन गेट इज सिंह द्वार. क्या नाम है? सिंह द्वार. उसको लायन गेट इंग्लिश में कह सकते हैं आप. और वहाँ पे ये पिलर है. और श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने अपने जीवन के ऑलमोस्ट 18 साल जगन्नाथपुरी में निकाले, वो हमेशा, वो अंदर नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर में, यानी मंदिर में अंदर तक भगवान के अल्टर तक नहीं जाते थे. वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े खड़े रोके ही भगवान के दर्शन करते हैं. तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के हाथ के फिंगरप्रिंट्स भी है वॉल के ऊपर, आप जब जाएंगे तो. और जगन्नाथपुरी मंदिर का एक और विशेषता है, वहाँ पे आनंद बाज़ार है. वो आनंद बाज़ार में आप जब जाएंगे तो इफ़ यू एवर गो देयर देन ऑल दिस पीपल दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जगन्नाथ प्रसादम. ये जो 56 भोग है ना, वो क्या करते हैं, तो मटके में रहता है, दिस आर वुडन पॉट्स. तो वुडन पॉट्स में सब खिचड़ी, दाल, स्वीट्स, बहुत सारा फूड रहता है. 56 भोग तो बहुत बड़ा. और प्रसाद रोज़ ख़त्म हो जाता है. ये 100,000 पीपल का प्रसाद, 1 लाख लोगों का प्रसाद रोज़ स्वाहा हो जाता है, फिर दूसरा बनाया जाता है. 24 घंटे प्रसाद बनता है. तो ये क्या करते हैं, वो मटके के जो पॉट्स हैं ना, जब खाली हो जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं. उसको तोड़ के वो कटा हुआ पार्ट है उसको ही प्लेट बना देते हैं और उसमें ही आपको प्रसाद देते हैं. तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है. आप कभी जाए जगन्नाथपुरी तो वहाँ पे प्रसाद जरूर से लीजिएगा. अंदर मेन द्वार से अंदर जाने के लिए 22 स्टेप्स हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं. ये मेन जो सिंह द्वार है वहाँ पे ऐसे लायन का ये स्टैचू है बड़ा. फिर वहाँ पे हनुमान जी का भी बड़ा स्टैचू है. और मंदिर के आजू बाजू एक बहुत बड़ा वॉल बनाया गया है. हाँ, उसको कहते हैं मेगंदा पछेरी. ये ओडिसी वर्ड है. दैट वॉल इज बिल्ट अराउंड द टेम्पल बिकॉज देर इज अ ओशन नेक्स्ट टू द टेम्पल. एक्चुअली टेम्पल इज ऑन द शोर ऑफ अ बिग ओशन. बहुत बड़ा समुंदर है बाहर जगन्नाथपुरी में. तो वहाँ पे समुंदर का बहुत आवाज़ आते रहता है, लेकिन ये वॉल बिल्ड करने के कारण आवाज़ अंदर तक नहीं आती. तो अंदर बिल्कुल शांत रहता है. आप जैसे ही वॉल के बाहर आ जाते हैं तो आवाज़ आना चालू होता है. तो ये जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, ये बड़ा आश्चर्य है.
हजारों साल पहले बनाया गया है और आज भी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो डीटीज़ है, ये वहाँ पे महाराज इंद्रद्युम्न ने इस्टेब्लिश किए। तो हमने जो कथा कही, हम वहाँ तक आके रुक गए थे कि जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो तो गायब हो गई, और फिर वहाँ पे महाराज इंद्रद्युम्न वॉज फास्टिंग, एंड एट दैट टाइम द आकाशवाणी सेड दैट यू बिल्ट अ टेम्पल एंड देन आई विल अपीयर. So this huge temple, what we just learned about, was built by Maharaj Indradyumna. But then the deity didn't appear for a long time. So one day when Maharaj Indradyumna was waiting for deity to appear, then Lord Vishnu appeared in the dream of Maharaj Indradyumna. You can see Maharaj Indradyumna sleeping, and deity appeared in the dream of Maharaj Indradyumna. And he said that tomorrow morning, when you go by the ocean, you'll find a big log, a floating log of wood. That is my form. You bring that log in the temple, and that is my form. It is called Daru Brahma. So Lord said that I will appear in the form of a Daru Brahma. Daru means wood. So next day, when Maharaj Indradyumna reached by the ocean, जब ocean पे गए तो वहाँ देखा उन्हें क्या, a big log of wood. But this log of wood was so heavy that it needed thousands and thousands of people to move such a big wood. But still, with thousands of people, it was not being moved. So at that time, then Maharaj Indradyumna prayed to Lord that this log wood is not moving, even we have thousands of people. So then Lord told Maharaj Indradyumna, when you are devotee of Lord, then you can talk to the Lord. Lord said that you built a big chariot, एक बड़ा रथ बनाइए, golden chariot, and then bring Shabra. What was the name of Shabra? Shabra Vishwavasu. Bring Shabra Vishwavasu and let him touch me. Then I will come along with you. So then the built big chariot, भगवान का एक रथ बनाया गया और विश्ववासु को बुलाया गया. और जब विश्ववासु को बुलाया और भगवान के भक्तों ने सब साथ दिया, तो भगवान की पहली रथ यात्रा वो तभी निकली. तो भगवान का जो वुड था, लॉग ऑफ वुड विच वॉज फ्लोटिंग, इट वॉज ब्रॉट टू द टेम्पल. बट नाउ somebody has to carve the deities. किसी ने भगवान की मूर्ति बनानी है, तो बहुत सारे कारपेंटर्स को, स्कल्पचर्स को बुलाया गया कि भगवान का डीटी बनाइए. लेकिन जैसे ही वो चिजलिंग करना चालू करते थे, उनकी चीजल हथौड़ी, छीनी हथौड़ा टूट जाता था, चलता ही नहीं था. तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज बड़े चिंतित थे. तभी एक बहुत वृद्ध, वेरी ओल्ड स्कल्पचरर वहाँ पे आए. उन्होंने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है. तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन? सो ही सेड दैट आई विल बी इन द क्लोज्ड रूम फॉर 21 days. 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा. अगर उसके पहले किसी ने दरवाजा खोल दिया तो मैं जितना काम है उतना ही करूँगा, वो छोड़ के चला जाऊँगा मैं. तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, आई एग्री विथ योर कंडीशन. एंड दैट स्कल्पचरर was inside that closed room, and then he started carving. So chisel and the hammer sound used to come first week. Second week also the chisel and hammer sound used to come. Maharaj Indradyumna was very eager to take the darshan of the Lord. भगवान का दर्शन इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन on 14th day when the chisel and the hammer sound stopped coming, so Maharaj Indradyumna was curious that what happened to that old sculpturer. शायद वो अंदर मर तो नहीं गया है, क्योंकि 14 दिन से अंदर बंद है. तो महाराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, so what did he see? He see this beautiful form of Lord Jagannath, Baldev and Subhadra. But the work was not complete yet. So then
The sculpture said that I told you that if you open the door, I will leave the deities as and where it is. So this is the form of Jagannath, Baldev, Subhadra, which we see here in our temple also, which you see in Jagannath Puri also. This was the form which was completed by that old sculpturer who was nobody else but विश्वकर्मा. विश्वकर्मा जो है वो भगवान के भक्त हैं, उनका ये कार्य है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान के जो फॉर्म है, इसमें भी आपको लग सकता है कि भगवान के ये फॉर्म में उनकी आंखें बहुत बड़ी है ना. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इज अ वेरी स्पेशल अपीयरेंस. आंखें बहुत बड़ी है जगन्नाथ जी की, है ना. और बलराम जी की आंखें वो भी बहुत बड़ी है, और सुभद्रा मैया की आंखें वो भी बहुत बड़ी है. तो आंखें क्यों बड़ी है भगवान की? तो वो बड़ी आंखों से आपके सामने देख रहे हैं कि आप कभी उनके पास आएंगे. रोज राह देखते हैं भगवान की, मेरे भक्त कभी आएंगे. कुछ भक्त 1 महीने के बाद आते हैं, कुछ भक्त 1 साल के बाद आते हैं, कुछ भक्त आते ही नहीं है. तो भगवान राह देख रहे हैं. कैसे राह देख रहे हैं? आंखें खुली करके और हाथ खुला करके आपको गले लगाने के लिए भगवान खड़े हैं. लेकिन हम हैं कि जो मानते ही नहीं, है ना. हम कहते हैं कि भगवान के आने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, भगवान हमारी राह देख रहे हैं. तो ये जो भगवान का रूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप, ये बड़ा ऑस्पिशियस रूप है. जो भी जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन करता है, कहते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाती है. तो जगन्नाथ जी टेम्पल हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल. दे डू नॉट अलाउ non-Hindus to enter into the temple. So as I said that if anybody goes there, they will check, and if they understand that, they will ask not to enter. That is the rule, we can't go against the rule. But Jagannath is very merciful. तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं कि सबको दर्शन देने के लिए हर साल रथ में बाहर आते हैं. इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा हर साल भारतवर्ष में निकलती है. 3 रथ निकलते हैं जगन्नाथ जी के. एक रथ है जगन्नाथ जी का, एक है बलराम जी का, और एक है सुभद्रा माता का. तो ये रथ में लाखों लोग जगन्नाथ जी के ज्वाइन होते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ज्वाइन होते हैं. और ये रथ हर साल नया बनता है. एवरी ईयर दे मेक न्यू रथ. और जगन्नाथ जी बाहर क्यों निकलते हैं? जैसे हमने किया, सब भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो बड़ी आँख खुली रख के लोगों को देखने के लिए जगन्नाथ जी आतुर है. तो फिर उनको बाहर लिया जाता है. तो जब जगन्नाथ जी को बाहर रथ यात्रा में लेके जाते हैं, उसके 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं स्नान यात्रा. जैसे आज क्या तारीख है? आज है 9 जुलाई. आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है थंडरगढ़ में, है ना. तो 22 जुलाई, एग्जैक्टली 2 वीक्स आफ्टर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है. तो आज के दिन हम जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा कर रहे हैं मानस रूप से, क्योंकि जगन्नाथ जी का हमारा डीटी है, उनको हम स्नान तो नहीं करा सकते क्योंकि फिर वो वापस पेंट वगैरह करना पड़ता है. लेकिन हम मानसिक रूप से आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं. और जगन्नाथ जी की ये स्नान यात्रा जब होती है तो जगन्नाथपुरी में उनको पानी से नहला जाता है, कोल्ड वाटर. और देर इज़ वो पानी जो है जगन्नाथ जी का, दे डोंट गेट द वाटर फ्रॉम द टैप वाटर. वहाँ पे अंदर एक स्पेशल वेल है, वो कुएं से ही पानी निकला जाता है. और वो पानी 108 पॉट्स भर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऊपर डाला जाता है. तो उसके बाद 2 हफ्ते तक जगन्नाथ जी के दर्शन किसी को नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? तो कहते हैं कि जब ठंडे पानी से भगवान को नहलाते हैं तो भगवान को सर्दी हो जाती है, तो 2 हफ्ते तक भगवान आराम करते हैं. ऐसे भक्तों का भाव है. लेकिन 2 हफ्ते तक इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी के ऊपर जब पानी डालते हैं तो सब पेंट वगैरह सब निकल जाता है, तो वापस जगन्नाथ जी को नया रूप देना पड़ता है. और फिर जगन्नाथ जी की 2 हफ्ते के बाद, एग्जैक्टली स्नान यात्रा के बाद, जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है. और रथ यात्रा में लाखों भक्त जुड़ते हैं, है ना. तो इस साल हमारे यहाँ भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है 22 तारीख को. आप सब लोग जुड़िए. जगन्नाथ जी का रथ है, उसकी भी बहुत स्पेशल है. ये देखिए वुड जो है, ये बड़ा स्पेशल वुड है. हाँ, ये एक प्रकार का साग का वुड है. और
इसके जो पेड़ है उसको भी बड़ी बड़ी स्पेशल तरीके से इसकी विधि विधान से पूजा करके वो पेड़ को काटा जाता है और उसमें से ये जगन्नाथ जी का रथ बनता है। और फिर रथ यात्रा के बाद यही वुड से जगन्नाथ जी के डीटीज बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो डीटीज है वो ये जगन्नाथ जी के रथ से बने हुए डीटीज हैं, यानी वो जगन्नाथ जी का ही रूप है। और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें भी एक सीक्वेंस है कि जो ये 3 रथ है, देखिए जो नंदी घोष करके रथ है उसमें रेड और येलो कलर का कपड़ा रहता है, वो है जगन्नाथ जी का रथ। और रेड और ग्रीन कलर का जो है वो है सुभद्रा माता का, और बीच में जो रथ है वो है बलभद्र बलदेव जी का। लेकिन जब रथ यात्रा निकलती है तो सबसे आगे बलराम जी का रथ रहता है और फिर बीच में सुभद्रा जी का रथ रहता है और लास्ट में फिर जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। और ये है एक्चुअल जगन्नाथ जी के दर्शन। जय जगन्नाथ। ये रियल जगन्नाथ जी का दर्शन है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जगन्नाथ जी का ये दर्शन आप कर सकते हैं। जगन्नाथ जी का डीटी जब वो लिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे भक्त, हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, बिकॉज वेरी हैवी डीटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और उनको डांस कराते कराते रथ में बैठाते हैं। जब आप कभी समय मिले तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वीडियो देखिएगा। तो जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा माता को डांस करते करते, तो भगवान को डांस बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के में डांस कर रहे हैं। तो कभी भी यहाँ पे भी एक पिक्चर है, देखिए ऊपर जगन्नाथ जी का पिक्चर, जगन्नाथ जी के आगे। तो हम सब, आप सबको डांस अच्छा लगता है? एवरीबडी डांसेस। किसकी शादी में है तो हम डांस करते हैं, दूल्हा घोड़े पे, बाकी के लोग आगे डांस करते रहते हैं। क्यों डांस करते हैं? कि भाई वो सूली पे चढ़ रहा है, तो हम मजा करें, चढ़ जा बेटा सूली पे। लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ऐसा भाव नहीं रहता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और भाव क्या रहता है कि भगवान आए, हम सब खुश हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान की रथ यात्रा में आप सब जुड़िएगा। जब जुड़े तो डांस भी करना है। हाँ, तो जगन्नाथ जी को भी अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे भक्त बहुत खुश हैं। एक्चुअली जब ये आरती होती है तभी भी बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ सब लोग डांस नृत्य जरूर से करते हैं। तो भगवान के लिए नृत्य करना बहुत अच्छी बात है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए ये पुराण से लिया गया है। तो कुछ कुछ वरदान दिए गए हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जुड़ने से क्या होता है फ़ायदा। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब विराजमान रहते हैं तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, उसके साथ ही जगन्नाथ जी भी आपको देखते हैं। वो देख रहे हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है। तो रथ से भगवान का रथ ऊपर रहता है तो सबको देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि बाय द साइट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ मर्सीफुल लार्ज टू आई ग्लोब्स द डिवोटी विल बी ब्लेस्ड विद प्योरिटी ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल इनोवेशन। तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है जब हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारा आध्यात्मिक प्रगति है वो बहुत बढ़ती जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी का दर्शन हफ्ते में एक बार तो कम से कम करना ही चाहिए। और कृपा से हमारे जगन्नाथ जी थंडर वे में है, हाँ, मिडल ऑफ नोवेयर है ना। थंडर वे इज इन मिडल ऑफ, क्योंकि टोरंटो 1800 किलोमीटर, विनीपेग 800 किलोमीटर, आगे पीछे कुछ भी नहीं है ना। तो इस मिडल ऑफ नोवेयर कौन है? जगन्नाथ जी आके बस गए हमारे यहाँ पे। तो हमें जगन्नाथ जी की बहुत सेवा करनी चाहिए। तो रोज दर्शन करने के लिए आना चाहिए जब भी हो सके तभी। फिर आगे लिखा है पुराणों में, ऑब्जर्विंग द रथ यात्रा विल डिसिपेट द सिंस कमिटेड बाय एम्बॉडीड पर्सन इन द पास्ट बर्थ। तो आप जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ खींचते हैं तो आपके जीवन के जितने भी पाप हैं, इस जीवन के और पूर्व जन्म के, वो सभी धुल जाएंगे। हाँ, तो जगन्नाथ जी का रथ खींचना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, पाप भी धुल जाएंगे। फिर तीसरा कहते हैं, द accompanying person in Rath Yatra will receive opulence at par with Lord Vishnu even if he hails from a poor family। अगर आप रथ यात्रा में जुड़ते हैं तो क्या होता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है और बहुत सारा ऐश्वर्य। अगर आप गरीब कुटुंब में भी है तो भी आपको भगवान माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांसिंग सिंगिंग एंड चैंटिंग द रथ यात्रा
entourage, the participant will be elevated to the level of सुपीरियर योगीज। जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है सिर्फ भगवान की रथ यात्रा में क्या करने से? डांस, नृत्य करना है, भांगड़ा नहीं करना है। नृत्य यानी सोबर करना है, हम बॉलीवुड डांस नहीं करना है। वहाँ पे एकदम सिंपल सा डांस, यानी जैसे हाथ पैर हिलाते हैं ऐसे भगवान को बस हम डांस कर रहे हैं, वैसा सुंदर डांस करना है। तो ऐसा बॉलीवुड डांस नहीं करना है भगवान के सामने। तो सिंपल सा डांस जो भक्त डांस करते हैं वैसा सिंपल सा भगवान को हाथ पैर हिलाते हुए, उसको कहते हैं योग डांस। हाँ, हरे कृष्ण। तो जब आप आएंगे रथ यात्रा में तो एक स्वामी जी आ रहे हैं, उनका नाम है भक्ति मार्ग स्वामी। तो भक्ति मार्ग स्वामी एक स्टेप सिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वामी स्टेप। क्या कहते हैं? स्वामी स्टेप। तो रथ यात्रा शुरू होने के पहले आप सबको एक क्लास दिया जाएगा, कोचिंग लेसन। हाँ, वो स्वामी स्टेप का। लेकिन स्वामी स्टेप की क्लास के लिए आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3:30 बजे आए, रथ यात्रा चालू होने के बाद आपको स्वामी स्टेप सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे भक्ति मार्ग स्वामी आपको सिखाएंगे डांस कैसे किया जाता है रथ यात्रा में। और फिर एक वरदान और है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रथ यात्रा बाय एनी मीन्स विल रिसीव अटमोस्ट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी क्या? तो भगवान के रथ को डेकोरेट करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। और फिर जैसे हम वहाँ पे जाएंगे तो जगन्नाथ जी का रथ को ऊपर जो छत्र लगाना है उसके लिए हमें 10-12 लोग चाहिए, बड़ा हैवी है वो छत्र लगाना। तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। फिर भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आएंगे सबको हमें प्रसाद बांटना है। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान के प्रसाद के लिए दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि चलो मैं गेहूँ दूंगा, राइस दूंगा, चावल दूंगा, जो भी आप देना चाहें, वेजिटेबल्स। तो रथ यात्रा में बहुत सारा अन्न की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अन्न दे सकते हैं तो डोनेशन दे सकते हैं मंदिर को। तो जो हिसाब से आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 10,000 5,000, जो भी आपकी यथाशक्ति है आप भगवान की रथ यात्रा में जुड़ सकते हैं। तो आप भगवान को वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके साथ ही रथ यात्रा में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इस साल हम बहुत सारे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, कुछ अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ कनाडा से आ रहे हैं। तो ये सब लोग अलग अलग प्रकार के परफॉर्मेंसेस करेंगे, एग्जीबिशन रहेगा भगवत गीता का, फिर छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रहेंगी, फिर बुक्स रहेंगी भगवत गीता और वेदा बुक्स विल बी देयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो और दूसरा कुछ नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल थिंग, कि आप अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, इज दैट वी कैन डू ऑल राइट। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेल योर फ्रेंड्स कैन यू कम फॉर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बिकॉज इफ यू टेल देम जगन्नाथ रथ यात्रा दे मे नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्ली। So tell them that this is the festival, because yes, this is a festival of India. Jagannath Rath Yatra is festival of जगन्नाथ जी वहाँ पे होते हैं। हाँ? तो आप ज़रूर से सब जुड़िएगा, ठीक है। तो आइए हम फिर अभी भगवान की आरती करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ। श्री गौरताई की जय। ऋषिका बहन, आइए तो आरती हो जाएगा, देख लीजिए। ऋषिका सिंह कर હું કરું છું Krishna Krishna